Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. One index of sadhana and understanding we have completed. Now we will enter into falsification or falsifying the perceived I factor. 293. Sarvatmana drishyam idam mrishaiva naivahamarthah kshanikatvadarshanaat janamyaham sarvamiti pratitihi utohamade kshanikasya siddhye sarvatmana drishyamidam mrishaiva naivahamarthah kshanikatvadarshanaat janamyaham sarvamiti pratitihi utohamade kshanikasya siddhye. The objective world is quite unreal. Neither is the ego real, nor it is seen to be fleeting. How then can the apparent I know all be true of the ego and so on, which are momentary? Idam drishyam means that perceived world. Perceived world, not only the form, even the sound, taste, smell, touch, everything. That idam drishyam sarvatmana mrishaiva. It is false, it is mithya in all dimension. Mrishaiva, sarvatmana mrisha. So, Vivekachudamani is such a book which repeats the same concept again and again. For the listener who wants to listen every day new thing, for them Vivekachudamani is not the perfect grantha. But who is a real sadhaka, who wants to be reminded every day, for them Vivekachudamani is the best grantha. I know my speed, I am very slow in teaching and explaining. Yet I have taken up this grantha. I don't feel that you are mere listener, really speaking. I feel that we are all sadhakas. Like suppose nowadays the Vachanamrit of Sri Ramakrishna is considered as Veda in the Ramakrishna periphery, but
It's the wonderful grantha for upliftment of our spiritual realm. This much of fat book, you can summarize it in 20 pages, 30 pages. Because many of the things has been repeated daily, daily, daily. Sometimes in a new way. Once Sri Ramakrishna's Sevaka, who many a times misunderstand his Savior, that I have studied something, but my Savior has not studied so much. Whatever he eats, I eat the same. Whatever he wears, I wear the same. And every day he speaks the same thing and same thing and same thing. Curiously and annoyedly, he once asked his Savior that why do you say the same thing every day? Why do you repeat the same thing every day to the people who comes every day to you? How you will get more people if you repeat the same thing? So Ramakrishna was very annoyed and told him, what do you understand? I know what I am doing. My words, I am telling. আমার কথা আমি বলছি তোরটা কি? But king of spirituality, king of sannyasi, king of the teachers, he knows that repetition is verily required. It's not a theater show. We really forget our aim, our sadhana pantha, our alertness. We are verily under the trap of Maya. Yet after listening to so much Vedanta, we suffer yet. It means our entertainment was okay, but Sravanam was not. For us, who every day sleeps outside instead of inside, for us, Vivekachudamani is the best grantha, which reminds us about our sadhana, about our attitude towards ourselves, about our attitude towards the others, each and everything. And Vivekachudamani is a complete grantha, absolutely. When there is a wave, suddenly you are in the peak as if you have realized God. Again we are getting down, again we are getting up. So this concept also we have studied, but how Bhagwan Shankaracharya ji, Yatiraj, Shikshakanam Shikshakah,
He knows what is better for us. Idam drishyam sarvatmanam mrisha eva. Mrisha is mithya. As it is mithya, so it is anatma. Clear? Kshanikatva darshanat aham arthaha na eva. That sense of I have made this, I have come, I have done this. That that Divakar Chaitanya I disappears verily in Swapna itself. And in Susupti, no way, no Divakar Chaitanya. So it is so temporary. And in Vyavahara also, everywhere we claim our ownership, credit, possessiveness. আমি করেছি, আমার বাড়ি, আমি লিখেছি। And হ্যাংলার মতো ভিক্ষে চাইছি কখন একটু প্রশংসা করি। Getting jealous for others যে তাদের প্রশংসা হচ্ছে, আমার কেন হচ্ছে না। যেই একটু ভুল হয়ে যায় আমরা স্বীকার করতে পারি। No, I did not do. He was doing, I just followed. Vyavaharikeyo ei I, in the transaction also, this I is so temporary. That is why we many a times dare to say sorry also when we know that we have committed mistakes. Sometimes we acknowledge that yes, I have made the mistake, but because he was doing, we want people around us. That is why I have done. She was telling, that's why I do. So that I, sense of I also, so momentary in transaction, in dream, in Sushupti. Which is so momentary, how I can have that much of guts, that much of confidence about that I. Kutaha kshanikasya aham adehe aham sarvam janami iti pratitihi siddhe. जो आई, जो मैं का भावना इतना क्षणिक है, इतना टेम्पोररी है, उसी मैं की भावना में अहम सर्वम जाना, मैं सब कुछ जानता हूं। जब मैं खुद को ही नहीं जानता and I start claiming, अरे আমার বলার দরকার নেই, আমি ওটা জানি। টিচারের কাছে শিক্ষা নিতে এসছে, সে বলছে, তারপরে বলছে আমি এটা জানি, আমি এটা জানি, আমি এই জানাটা সবটাই। এতটা মৃষার মধ্যে মানুষ থাকে। They are in these things and they are so dangerous for themselves, not for the society. Society will be taken care by others, not by you. Take care of yourself. We become the dangerous element for us, our thinking process, our thought process. जिस अहंकार इतना क्षण स्थायी है, बादल जैसे, एक कोमल स्पर्श भी जो सहन नहीं कर पाते,
उस आई के ऊपर, उस मैं भावना के ऊपर इतना गर्व किस लिए? हर चीज क्षणिक है। हम लोग देखा कि कितना कीट पतंग थोड़ा सा अनमोना होके ऐसा कर दिया तो मर गया। लगता है अरे इनका क्या है, हमारा क्या है। थोड़ा नहाते जाकर बाथरूम में गिर गया, बस किस्सा खत्म। उसी के ऊपर हम लोग अहम 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 करते हैं। नाउ वन डाउट में कम, ये अहंकार को यू कैन टेल दैट इट इज टेम्पोररी। वक्ता, शिक्षक, ऐसे वक्ता की बात तो छोड़िए, जो स्टूडेंट रूप में आए हैं, ऐसे व्यक्ति भी कभी कैसे अहंकार होता है, कोई प्रॉब्लम बताए, टीचर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, स्वामी जी आप जो बोल रहे हो सब मैं जानता हूं। नो यू डोंट नो। तुम जिस प्रकार से जानते हो और तुम जिसको जानना समझते हो, ये जानना नहीं है। अगर तुम जानते तो इस अवस्था में मेरे पास नहीं आती या किसी के पास नहीं जाते। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र इट इज नॉट माई। ज्ञानम मीन्स ज्ञानम स्थिति। ज्ञानम स्थिति के सिवा उस ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं। हमारे पास एक टॉर्च है, इतना सा नहीं, इतना सा नहीं, इतना सा, इतना बड़ा, इसको एक मारने से किसी का डेथ हो सकता है लेकिन वो जलता नहीं, उसको फायदा क्या है? लेकिन गर्व है, मेरे पास टॉर्च है, लेकिन कोई काम का नहीं। अगर जो ज्ञान काम का नहीं, उस ज्ञान का फायदा क्या है? आई नो वट एवर यू आर टेलिंग, आई नो वट एवर। अरे you don't know that, you acknowledge first, or you may be the knower of these things little bit, but you don't know how to get established in it. Maybe whatever it is there in the book, whatever you listen, you are listening for a long time, you know that, but you don't know how to get established in it. मटर पनीर बनाने के लिए जो जो सामग्री का जरूरत है सब आपके पास है। पनीर है, मटर है, जायफल है, जैत्री है, केसर है, दही है, सब कुछ है। टीचर के पास गया, ये कैसे बनाना बेटा, तुम्हें पनीर लाना पड़ेगा, है वो मेरे पास, मटर वो भी है। तो जो बोलेंगे उसका तो एनर्जी नहीं रहेगा, विरक्त हो जाएगा ना। अरे भाई जो बोल रहा है उनको सभी पता है, सुनने का आदत डालना पड़ता है। ये लाना पड़ेगा मतलब दिस इज रिक्वायर्ड। ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास नहीं है, इट इज देयर विथ यू, बट इट्स अ स्टाइल ऑफ सेइंग। उस इतना कुछ रहने के बाद भी तो मैं बना नहीं पाया, आया इधर कोई कुक के पास, कैसे बनाना पड़ता है, इजंट इट? सो अहंकार को हम लोग क्षणिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे कोई है जो
बोलने बोलना चालू किया, श्रोता बोल रहे रहने दीजिए, मुझे सब पता है ना। अभी सवाल हो सकता है कि अगर अहं क्षणिक है, मैं की भावना, तो जो लिसनर है उनको कैसे पता चलता है कि आई नो ऑलरेडी। अभी देखिए टोटल डायमेंशन डिफरेंट है। जो बताया, जो सुना, उससे थोड़ा बाहर आ गया। क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, everything is getting changed. My each and every blood cells, tissues, everything is getting changed in a due course of time. Some cells live only 1 day, some cells live only 1 month, some for 7 days. Absolutely new. ये चमड़ा, ये जो सब कुछ कैसे ये नया बन रहा है और पुराना हो जा रहा है, ये आश्चर्य है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर आधारित होकर ही अहम को भी क्षणिक बता दिया। लेकिन जब आप बोलेंगे मैं जानता हूं आप जो बोल रहे हैं, या 40 साल पहले मैंने ये सुना था, हाउ यू कैन से, हाउ यू कैन क्लेम दैट अहम इज टेम्पोररी? गॉट द पॉइंट? कोई कोई तर्क करते हैं कि अहंकारी आत्मा है, और ये आत्मा खुद का, एक एक का आत्मा एक एक है। मतलब आपका आत्मा अलग अलग है, मेरा आत्मा अलग है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं मैं वो नहीं देख रहा हूं। आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूं। तो आप कैसे बोलते हैं कि सारे आई एक है? सबका आई अलग है, और ये अहंकारी आत्मा है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने बाद में आनंद गिरी जी ने इसका समाधान दिया है। जिस सुसुप्ति में अहंकार की कोई अनुभव ही नहीं होता, लेकिन जागृत अवस्था में अहंकार की अनुभव होता है। इसका मतलब है इसका उत्पत्ति भी होता है, विनाश भी होता है। क्योंकि नींद से उठने के बाद व्हाट द फर्स्ट थॉट कम्स, डू यू नो? आई एग्जिस्ट, आई एम, मैं हूं। देन कोई रे चानिया, बाद में द सेंस ऑफ चिल्ड्रन, सर्वेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, हाउस। एक सरदार जी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की चीफ इंजीनियर थे, बना रहे थे बिल्डिंग। 15 तला के ऊपर छत में काम हो रहा था। नीचे कोई मैसेज आया, तुम्हारे बाबू का घर में डेथ हो गई। बुर्बाक आदमी था, जो सुनने वाला ऊपर गया और सरदार जी को तुरंत बोल दिया कि आपका बेटी का डेथ हो गया। उनका इतना शौक लगा, उन्होंने छत से कूद पड़ा
और कूदते कूदते जब 10th फ्लोर में आया तब लगा अरे मेरा तो बेटी नहीं है। जब 5th फ्लोर में आया तब सोचा अरे मेरा तो शादी ही नहीं। जीवन ऐसे ही है। तो उत्पत्ति और विनाश होता है। अहंकार की जब उत्पत्ति होता है तब ऐसे गलतफहमी होता है, ये मकान मेरा है, पति मेरा है, पत्नी मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरा है। लेकिन जब अहंकार की विनाश हो जाता है तब nowhere else, nobody. इवन इन जागृत काल में जो बताया आपको, जिस शरीर में मैं की बोध होता है, we don't have any mercy to unclaim this is me for our excreted field. इतना क्षणिक है। सो क्षणस्थाई, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं, आप जानते हैं वेदांत की परिभाषा कुछ अलग है कि अहंकार क्षणस्थाई इसलिए ये मिथ्या है। नाउ वी विल जस्ट little bit summarize the thing. How should we know the progression of our sadhana? Or today we will just read another sloka. You think upon it, then we will discuss on the progression. We just want to see Gurudev's commentary. From the standpoint of the absolute, all that we see and experience, the entire object, emotions, and thought is false. From the standpoint of the waker, all that he saw in the dream is false. Not only is the world unreal, but even the ego, the I, is unreal. They are unreal because they are momentary. The concept of I changes every moment. In childhood, youth, middle age, and old age. In the dreamer, waker, and deep sleeper, every moment there is a different concept of I. The objective and subjective worlds too are constantly changing. Yet we say, I know, I have the experience, and so on. This can only be a false delusory notion with respect to the ego and so on. If there be a set of continuous experiences, then there must be a changeless factor in you which knows all changes. The world of 20s, 30s, 40s, and the 50s and the 60s has changed. You as an individual of 20, 30, 40, 50, and 60 have also changed. Yet you say, I know, which is the factor in you which as a child experienced your childhood, as a young man experienced your youth, and as an old man is now experience your old age.
childhood, youth, middle age, and old age are the different conditions, different stages of life. What is the great truth which functioning through all these as the experience of all of them? It is the Atma. It is in its play that we cry out, I have experienced all these. Aham padarthastvaham sakshi nityam susupta vapi bhavadarshana brute yajo nitya iti sruti swayam tat pratyagatma sadasad vilakshana. Aham padarthastahame tahamadi sakshi nityam sushupta vapi bhavadarshana brute yajo nitya iti sruti swayam tat pratyagatma sadasad vilakshana. 294 it is. So, tu, lekin, but, kintu, aham padartha, aham adi sakshi. Aham padartha, the substance of the very aham, जिसको हम लोग देही बोल सकते हैं. देही वही पदार्थ है जो रहने से अचल शरीर सचल प्रतीत होता है, और जिनको ना रहने से ये सचल शरीर भी अचल हो जाता है. यही अहम पदार्थ है. और ये अहम पदार्थ क्या है ना, सारे अहम की साक्षी है, दृष्टा है. एज सुसुप्तो अपि भाव दर्शनात् नित्यम. ये अहम नित्य नहीं, लेकिन अहम पदार्थ नित्य है, क्योंकि सुषुप्ति और स्वप्न में भी देयर इज वन स्वप्न दृष्टा एंड वन स्वप्न. दोनों को ही इल्यूमिनेट करते हैं अहम पदार्थ. एंड दैट अहम पदार्थ रिमेन्स बिकॉज इन सुषुप्ति आई टेल aham kimapi na janami, I don't know anything else. He ajaha nitya. अजहा नित्य, ये दोनों शब्द हम लोग स्मृति में पाता है, श्रुति ग्रंथ में. ये आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, और नित्यम सर्वगत स्थानु, ये सब शब्द हम लोग श्रुति में मिलते हैं. स्वयं श्रुति ब्रुते, स्वयं वेद भगवान बोल रहे हैं. तत्प्रत्यक आत्मा, ये जो अंतरात्मा है, ये सत असत विलक्षण है. बियॉन्ड द हियर, सत मीन्स स्थूल, असत मीन्स सूक्ष्म. नहीं तो सत असत विलक्षण आप बोल नहीं सकते. इट इज बियॉन्ड द ग्रॉस एंड द सटल. सद असद विलक्षण, क्योंकि सत के ऊपर कैसे होगा? ये सच्चिदानंद की सत नहीं. ये सत के मतलब
जिसको हम लोग देख पा रहा है और सत्य बोल के प्रतीत हो रहा है, मान रहा हूं कि ये चेयर सत्य है, शरीर सत्य है, इस सत्य, ये मृषा रूपी ये जो सत है, ये सत और असत, स्थूल और सूक्ष्म की पार है, सारे कार्य कारण की साक्षी है, ये इस शरीर से अलग है। यही आत्मा आप है। आपके साथ शरीर का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध। हरि ओम तत्सत।